That's it. Where it hits, it punches below its weight. We have to punch, not above our weight. We have to punch, not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि। हमारे साथ हैं राजा मुनीब साहब। ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माय सेल्फ हैज बीन वेटिंग टू टॉक टू हिम कि भाई ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। बट जाने से पहले मैं बताऊं, भाई बोलते हैं ना घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारना भी शुरू हो चुका है। मैं क्या कि एलईटी वाले ठका ठक ठुक रहे हैं और यहाँ पर तो अननोन डॉक्टर का फ्रेम शुरू हो चुका है। अननोन डॉक्टर अभी हार्ट अटैक देता है यार। ये क्या, ये राह की साजिश जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं पाकिस्तानियों को बोलूंगा यार, राह से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि राह ना आपके बंदों को हार्ट अटैक देके ठोक देगा। आज सुबह का अपडेट जरूर देखिएगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया मसूद अजहर को भी हार्ट अटैक हो गया। दूसरे लोग 3-4 ठुके, उसको पता चला, उसके दिल में दौरा पड़ गया। बढ़िया है, सुन के अच्छा लगा। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान की जमीन पे अब कब्जा पूरी तरह से होना शुरू हो गया है। अफगानिस्तान हैज टेकन चार्ज, ठोकना शुरू हो चुका है। लेकिन क्या है अमेरिका का गेम? क्योंकि बहुत टाइम से हम इस चैनल पे बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। कब आने वाला है, बात करते हैं राजा जी से। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन। यार ये गुड टू सी यू अगेन। मैं क्या, तालिबान ने तो ऐसी घंटी बजाई है, मतलब व्हाट 8th लार्जेस्ट आर्मी, 9th लार्जेस्ट आर्मी क्या है इनका? 7th और 8th समथिंग लाइक दैट। 8th लार्जेस्ट आर्मी, ऐसी घंटी बजाई। एक इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट तो कर दिया, बॉम्ब वहां पर बॉम्बिंग तो कर दी, पता नहीं कौवे मारे क्या करा, आई हैव नो आइडिया। लोग बोलते हैं 71 लोग मार दिए, और मार मूर तो दिए। पाकिस्तान के उससे ज्यादा ठुक गए अभी ऑलरेडी एक दिन के अंदर ही। 45 civilians in that air strike. अब वो तालिबान, I will promote Taliban propaganda यार, come on, I mean. No, it is not propaganda. I have posted pictures. I have photos and videos. Maximum of them are women and children. Taliban propaganda says 71 people died there. तो मैं 71 के फिगर में अटका हूँ। नहीं, it's not 75. It's around 45. Propaganda, देखो, propaganda दोनों साइड से on है. It's very difficult to find truth. Both are doing propaganda against each other. ठीक है? मुझे ये बताओ, नंबर 1 आर्मी, ठीक है, तालिबान कम्स इन चप्पल, सैंडल, घोड़े पे, मोटरसाइकिल पे, सिर के ऊपर, जैसे अमेरिकन बोलते हैं तौलिया बांध के आते हैं, एंड ऐसी ठुकाई यार, ब्लडी हेल, द काइंड ऑफ फायर पावर देव सीन। वो जो फेक वीडियो चल रहे हैं वो नहीं है। आई हैव सीन द एक्चुअल फायर पावर वीडियोस। मैं यहाँ डाल नहीं सकता बिकॉज़ YouTube will kind of put it down. I saw that video. I saw that video. Weapons यार। It's a night shot. I have seen that video. Yes, I know which one you're talking about. क्या है यार ये क्या तालिबान? No, they always had the firepower. They always had the firepower. They have access to American weapons. यार फायर पावर होना तो यार, बंदर के हाथ में भी उस तरह दे सकते हो आप। चलाना no, ये तो बंदर इस साइड है ना, चलाना तो पाकिस्तानी फौज को नहीं आता। वो तो प्रिपेयर्ड है, वो तो 40 साल से चला रहे हैं। They are experts in weapon handling. What do you think is the Taliban agenda? क्या कितना लेंगे ये लोग जमीन? देखो, आज तो तालिबान ने ये कहा, we don't consider KP as a part of. Clearly. ठीक है, पाकिस्तानियों ने पहले ही बोल दिया कि यार ये अफगान है, राइट? लास्ट शो, इफ यू रिमेम्बर, आई टोल्ड यू ये तीरा वैली में आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। दे आर सिटिंग इन तीरा वैली, राइट? बॉर्डर पे स्किमिशेस आज बंद हुए। They have, there is a kind of silence on the border, but it will not stay silent for a very long time. दूसरा, अभी passes बंद हो जाएंगे, बर्फ पड़ी है कई जगह पे, so pass भी बंद हो जाएंगे, so it will be a low affair. Spring आने दो, spring के साथ साथ देखो फिर पाकिस्तान की हालत क्या हो जाती है। I wrote an article today which should be published tomorrow or day after, saying that 2024 were the year of blast for Pakistan. कहते हैं न्यू ईयर ब्लास्ट होता है, तो पाकिस्तान के लिए ब्लास्टिंग ईयर था।
if I look at the data, around 900 attacks this year. There were 645 attacks last year. 900 अटैक है इस बार. अक्टूबर नवंबर alone में 455 people have died in October and November alone, जिसमें से 60% casualty is Pakistani army casualty. तो ये शुरू हुआ है क्या खलील हक्कानी के मर्डर से कि किससे शुरू हुआ है? नहीं, ये शुरू हुआ है टीटीपी के अटैक से. खलील हक्कानी का मर्डर तो ऑब्वियसली इज अ कैटलिस्ट, तो उसका जो उन्होंने बदला लिया, जिसमें मैं बड़ा क्लियरली वर्ड यूज कर रहा हूं, मर्डर. There's a reason. No, he was murdered. Yeah. But he was murdered. What else? What else would you call it? He was assassinated. So his assassination gave them. They tokified about 35 of their men in Dera Ismail Khan 2 days after that, and then the Pakistanis retaliated with their strikes. That too on the wrong position. उन्होंने जाके वो रिहैबिलिटेट किए थे, टीटीपी की फैमिलीज जो की थी उन पे कर दिया, तो टेम्परेरी शेल्टर एक था वहां पे, उसको उन्होंने अटैक किया, तो दे किल सिविलियंस. ऑब्वियसली इफ यू विल कैरी एयर स्ट्राइक्स, तो तालिबान तो चुप करने वाला है नहीं. दे आर नॉट गोइंग टू सिट वेरी क्वाइटली. तो तालिबान हैज रिटेलिएटेड एंड दिस इज अ ऑनगोइंग स्क्रिमिश. ये रुकने वाला तो है नहीं, क्योंकि तालिबान आल्सो, देखो, दे नो दैट पाकिस्तानीज आर प्लेइंग दैट ISIS गेम, ठीक है, and the Pakistanis are trying that for a very long time. So Taliban is not going to sit very quietly. आज उन्होंने उस इंडियन को भी assassinate कर दिया, by the way, वो केरला का जो था, केरला वाला. ऐसा है, मतलब उसको तो डेथ सेंटेंस मार के हो गया उसको. हाँ, मतलब they have killed him, they have finished him off. उसको शायद फांसी दी उन्होंने, so they have killed him as well. But this game is on, and we've been discussing this for a very long time, that the Afghan Taliban, and they will be at loggerheads very soon. They have been throughout this year, काफी पंगा हुआ डोरन लाइन पे, but अब escalation start हो. तो पाकिस्तानियों ने स्ट्रेटेजिकली किया है. पाकिस्तानियों ने स्ट्रेटेजिकली किया है. आपने 22 नवंबर का एक डेट दिया था कि भाई 22 नवंबर के बाद बैंड बजने वाली है इनकी. तो अभी नाउ हाउ डू यू सी, इज दिस द बैंड दैट यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट, कि ये अभी जो ढोलकी बज रही है ये है कि कुछ और होने वाला है अभी? नहीं, ये ढोलकी शुरू हो गई ना बजनी. देखो, पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली यूज किया. पाकिस्तान इज कैरिड आउट एन एयर स्ट्राइक नोइंग ऊपर जो है पासेस बंद, सो दे थॉट दैट रिटेलिएशन उतना हेवी नहीं आएगा. बट व्हाट दे हैव मिसकैलकुलेटेड इज द प्रेजेंस ऑफ टीटीपी ऑलरेडी इन केपी प्रोविंस. नाउ द पाकिस्तानी एयरफोर्स इज अंडर थ्रेट. आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इन जनवरी यू विल सी वन ऑफ द बेसेस बीइंग ब्लोन अवे बाय टीटीपी. पिछली बार जब इन्होंने वो कितने वो F-16 में, यानी JF-17 नहीं, F-16 नहीं थे, JF-17 थे. हाँ. उसके बाद इनका एक अटलांटिक 2-3 तोड़ दिए थे इनके. नहीं, now expect a larger attack, couple of attacks on a larger scale. I wouldn't be surprised next month it happens. 2025, okay. That's how TTP starts in Pakistan. That is how I see that happening. So, but this has begun. The game has begun. This will shape up by March. तो आपको क्या दिखता है आगे जाके, इनका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? तालिबान का ऑब्जेक्टिव क्या होगा अभी आगे जाके? See, the Taliban objective is very, very clear, that they will not let ISKP come into their territory and reign supreme, and they will not let Taliban break up. The Pakistanis are trying very hard to break up the Taliban and to weaken them. The Talibanis are in control. अब आप देखो ना, सारे कहते हैं हकानी is a Pakistani stooge. Khost and Pakdita, ये दोनों areas जो हैं हकानीस के, that is where they come from. The strikes have been carried out in their area only. Khaliluddin Haqqani has been taken out by an ISKP fighter. They have made 2 arrests in that case, which is they're very tight-lipped about it. 2 arrests किए उन्होंने उसमें, but the identity has not been revealed of the attacker yet. So that tells you that there is that Haqqanis are not what the common perception is being drawn कि Akhundzada और Haqqani जो है अलग है, और Haqqani जो है that he is more excuse me, he is more sympathetic to Pakistan and all that. Haqqani might be playing this game with ISI on a different panel, but Haqqani is not somebody who's going to compromise on power in Kabul. So this is an open fight between the Taliban and this, and Taliban is going to be very, very, they are going to gain strategic depth in Pakistan by next year. This is what I predict. तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं. इसके अंदर 3-4 चीजें हैं जो हमको थोड़ा सा वील हैव टू लुक एट. एक है चाइना, क्योंकि चाइना का टट्टू ठुक रहा है पूरी तरह से,
एंड चाइना ने पैसे तो दिए हुए टीटीपी को, भैया इनको ठोको, जो मर्जी करना है करो, हमको मत, हमको माफ करो यार, डोंट ब्लडी किल अस, क्या कर रहे हो। टीटीपी को पैसे दिए, बीएलए को नहीं दिए, बीएलए तो सुनेगा नहीं इसकी बात। बट मुझे ये बताओ कि चाइना का क्या नजरिया रहेगा व्हेन ही इज लुकिंग एट दिस, ये जो चल रहा है, और जो भी कह लो जो सीपीसी नीचे आ रही है और तीरा वैली के पास, आई मीन ज्यादा दूर नहीं है वो, तो हाउ डू यू थिंक it's not. The Chinese wouldn't mind Afghan taking control because the way the Chinese are dealing with Afghans on Wakhan corridor, where it's the Chinese forces and the Taliban forces which are complete control of Wakhan. They might not mind Tira Valley completely under control of Taliban and then have a safe passage for their CPEC. This kind of flux is not suiting them. Second thing is, if you look at the way now the Chinese will also be thinking at looking at the scenario ki yaar jo hum, the pressure they are putting on Pakistan on their own forces, ki we want to bring in our own forces. Will Chinese kind of consider that again? Because they'll be putting them out at direct exposure towards TTP. बैंड बजा देंगे यार उनकी तो। So Tabi, see, that is why I'm saying, the Americans are going to be very happy because this should make the Chinese rethink whether they want to get their foot on the ground in Pakistan or not. Because the Chinese would not be very confident looking at what is happening between Taliban and what is happening between Pakistan. They have tried to broker the peace. They have told them ki Beijing aa jao or we will do a round table conference of peace. I don't think that is happening. Even if that happens, kuch nahi nikalne wala usme se. Right? So Chinese will also be thinking ki what they want to do going forward. They're not very confident. So कराची वराची में जो उनके हैं थोड़े बहुत एसेट्स वहां पे तो वो आ जाएंगे, बट हाउ विल दे सिक्योर द एंटायर थिंग, आई डोंट। बलूचिस्तान बॉर्डर याद है कर सकते हो, मेनलैंड जो सेंट्रल पाकिस्तान है उस, हाँ बाय द वे काफी सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि यार पाकिस्तान मत बोलो, भिखारिस्तान बोलो, बट यार मेरा नाम ना पाकिस्तान के लिए भिखारिस्तान नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। भिखारिस्तान वो होता है, भिखारिस्तान का जो ताज है ना वो यूनुस पहन रहा है आजकल, तो भिखारिस्तान उस तरफ है, ये है पता नहीं क्या है ये, जो भी है आर्मिस्तान, ठीक है, आर्मी का स्थान जो है ना वो ये। तो ये जो द सेंट्रल एरिया जो है आपका क्या नाम है आपका, इंडस के ऊपर, बेसिकली पंजाब, हाँ तो पंजाब के एरिया, हीरा मंडी, थैंक यू सो मच, हीरा मंडी का जो सेंट्रल एरिया है वहां पर आप देखो, आई मीन इफ यू लुक एट इट दैट प्लेस, सॉरी, if you look at it that place, that is the place Chinese want to be at, ठीक है। now अगर Chinese वहां पर आके बैठते हैं, आपको क्या लगता है कि the will the TTP BLA इन लोगों को अटैक करेंगे? I don't think so, not there. See, the Chinese took that SCZ in control, right? वो गार्ड ने वहां 2 Chinese को भी मारा। BLA might try to attack them wherever the Chinese come in. वो होगा, ठीक है। इवन द पाकिस्तानीज वुड वांट अ बिट ऑफ अ डैमेज टू द चाइनीज टेरिटरी, उसमें आईएसआई भी रोल प्ले कर सकती है, टू सॉर्ट ऑफ टेल चाइनीज की स्टे अवे फ्रॉम आवर टेरिटरी। बट ओवरऑल लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, आई डोंट थिंक द चाइनीज वुड बी लुकिंग एट गेटिंग देयर फुट डाउन एवरीवेयर इन पाकिस्तान। दे माइट बी लुकिंग एट नाउ ग्वादर एंड अराउंड ग्वादर एट इज सिक्योर दैट एरिया। दिस इज व्हाट आई सेड, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर चाइनीज टू प्रोटेक्ट देयर नेशनल्स ऑल अलोंग सीपेक। देखो ग्वादर में प्रोटेक्ट करना एक चीज है, इन्होंने बोला उसके बाहर जब निकलोगे सप्लाई लेन को, फिर क्या करोगे, फिर कहां जाओगे? इन्होंने बोला हम आपको ग्वादर दे देते हैं, चाइनीज ने बोला भाग जाओ यहाँ से। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो मांगी इन्होंने जाके, इन्होंने बोला कि भाई हम ग्वादर दे देते हैं आपको, इन्होंने बोला कि जी जाओ यहाँ से। तो ग्वादर में नहीं, इन्होंने तो चाइनीज ने ये नहीं बोला जाओ यहाँ से, इन्होंने बोला था, औकात से बढ़कर बोला, मुंह खोला था कि हमको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे दो, ग्वादर ले लो। उन्होंने बोला जहन्नम में जाओ तुम लोग, तो हम ऐसे ही ग्वादर ले लेंगे तुमसे, we'll take it from you no matter what, so you are in no position to make any demands to us. That is what the Chinese response was to the Pakistanis, right? So the Chinese will come into Gwadar, they will come into Gwadar, but the larger question is what outside Gwadar? What about the supply route? What about the rest of the area? That is a very vulnerable area, and that is what the Chinese would be thinking how to tackle that. So if TTP takes over Tira Valley and all that, the Chinese will be very comfortable.
will be extremely comfortable. They're not comfortable with the Pakistanis. They'll be very extremely comfortable because they're dealing well with the Taliban. Fantastic. And they want Now, the Taliban first. having this as the base, अब आपने बोला कि भाई चाइनीज को अच्छा लगेगा कि अगर ये तालिबान आ गए, तो चाइनीज आर बेसिकली नाउ ऑन द सेम पेज जो अमेरिकन्स भी हैं उसी पेज पे कि भाई साहब इसको तोड़ना है, Hmm. कि बहुत हो गया इसका काम. Hmm. तो चाइनीज आर आल्सो ऑन द सेम पेज नाउ. Yeah, they have to be on the same page. On some issues, they are on the same page. फैंटास्टिक. तो कल रात को मैं जनरल दुष्यंत से बात कर रहा था इसके बारे में, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बोली. उन्होंने बोला देखो यार, अमेरिकन को चाहिए ग्वादर, जो हमने काफी बारी डिस्कस भी करा है शो के ऊपर, कि भाई बलूचिस्तान इज व्हाट अमेरिकन आर लुकिंग फॉर. उनको ज्यादा नहीं चाहिए, बलूचिस्तान दे दो, बाकी पंजाबी जो क्या वो पंजाबी मुसलमान जर्नैल है उसको जरा बाहर में जान दो, डजंट मैटर. मतलब नाउ यू आर स्टक इन अ पोजीशन वेयर जो सो कॉल्ड एक ग्रेट गेम, और जिसके बारे में 6 महीने पहले हमने बात करी थी कि ये दोनों घुसेंगे, दोनों ठुकेंगे अंदर जाके, एंड जो अफगानिस्तान में पहले होता था वो पाकिस्तान में होगा, वो थोड़ा सा ईस्टवर्ड शिफ्ट हो गया है. Are you saying that great game has now started? Of course, that has started. That has already been in play for last 3 years. So the whole point of America handing over Afghanistan to Taliban was that. ANDSF was very open to make. हिंदी में बात कर लो तो थोड़े लोग बोल रहे हैं बार बार. यार अच्छा, सॉरी, 2021 में जब अमेरिकन ने तालिबान को पावर क्यों दिया? हाँ, उन्होंने हैंड ओवर किया अफगानिस्तान तालिबान को पावर. ये नहीं है कि वो खाली छोड़ के भाग गए वो लोग वहां से. तो अमेरिकन बड़े स्मार्ट हैं इस मामले में. उनको पता था आगे जाके क्या होगा. देखो, अगर ANDSF रहती है, वो रहते, देवर वो बड़ा ओपन थे पाकिस्तान के साथ ड्यूरेंट लाइन पे भी नेगोशिएट करने को, उनको वॉल बनाने को एंड ऑल दैट नॉनसेंस एंड जिंगजैग वो करने के लिए तैयार थे, बिकॉज एंड फ्लक्स रहता वहां पर. तालिबान का नो नॉनसेंस है, कंप्लीट नो नॉनसेंस है. सो अमेरिकन ने तालिबान को गेम ही इसीलिए दिए. और अब आप उसको रेसिप्रोकेट करो ना, आप इसको, अब आप इसको सीरिया में देखो, सीरिया में क्या हो रहा है. अब आप इसको मिडिल ईस्ट में ले जाओ. सो ये पूरा जो एक बेल्ट बनता है विच इज वेरी एंटी ईरान, राइट, और एक स्टेबल काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनती है. अब इराक जो है और जॉर्डन वगैरह है, वहां पर थोड़ा सा रहेगा प्रॉब्लम, लेबनान में रहेगा प्रॉब्लम, बट लीव दैट असाइड, वो डिस्कशन कुछ और है, वो उस पर हम जाएंगे नहीं. बट अगर आप पाकिस्तान को भी देखोगे, आप देखो कि जो HTS पे फाइटर्स है वो कहां से आए, जो आईसिस में फाइटर्स हैं वो कहां से आए, जो हमास में फाइटर्स हैं वो कहां से आए. सो पाकिस्तान हैज बीन सप्लाइंग दोज जहादीज वर्ल्ड ओवर. इट इज अ टेररिस्ट फैक्ट्री बेसिकली. ये तो साले दोनों तरफ इसको से ये लड़े, ये शिया से भी लड़े और हाँ, सुन्नी से भी लड़े. ये दोनों से लड़े ना, क्योंकि इनका काम, देखो यार, इनका कोई मोरल या इनकी कोई आइडियोलॉजी तो है, ठीक है. जहां से डॉलर आएगा वहां ये अपने बंदों को भेज देंगे कट्टे मरने के लिए. इनका सिंपल बिजनेस है, टेरर बनाने का इनकी फैक्ट्री है. द प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान कैन नॉट बी अलाउड टू ग्रो मिलिटरीली. इसको वीकेंड करना ही करना, और जितना ये वीकेंड, जितना ये सबसर्वियंट रहेगा, उतना ये डेंजर नहीं है. अदरवाइज दिस इज अ पोटेंट डेंजर टू American interest to Chinese interest, both interests. It's very simple. तभी ये चाहते हैं अब इमरान खान बाहर है. उसका गेम बताओ, अभी ये क्या होने वाला है इमरान खान में? अब देखो ना, अब राना सनाउल्लाह का आप आज का स्टेटमेंट पढ़ो कि इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी को एक साथ बैठना चाहिए और अपने पास्ट में जो भी गलतियां हैं उन लोगों को एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए. बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग कमेंट ही हैज मेड इज कि जनरल बाजवा जैसे बंदों क्यों फ्री हैं गोल्फ खेलने के लिए, जिन्हें सारा मैस मचाया. सो इमरान, they think, is a stabilizing factor in Pakistan. He is a Taliban Khan. He is a soft Taliban. जो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का तालिबान टेक ओवर, सॉफ्ट तालिबान टेक ओवर, वो थ्रू इमरान खान ही होगा. वो वहां और कोई लीडर नहीं है जो वो करने देगा. सो इमरान ही एक ऐसा बंदा जो वो करने देगा. और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी वही है कि पाकिस्तान को उसी लाइन पे लिया जाए. पिछली बार जब ट्रम्प था पार के अंदर, ट्रम्प की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था कि ये बैकस्टैबर्स हैं, वी शुड नॉट ट्रस्ट देम, ये गधे हैं, एंड वी डोंट वांट टू काइंड ऑफ दिस एंड दैट.
ऑल्दो रिचर्ड गर्नेल का कल तक रिपोर्ट चल रही थी कि भाई ही इज बीन मेड स्पेशल एनवॉय एंड ऑल दैट, आज पता चला कि वो फेक थी। बट इन एनी केस रिचर्ड गर्नेल इज वेरी क्लोज टू ट्रम्प और उसके इनर सर्कल के अंदर है वो। तो इनर सर्कल के अंदर अगर है तो अगर उसका जो भी गड़बड़ चल रही है रिचर्ड गर्नेल की तरफ से, इसका कितना इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान पे? देखो, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि पाकिस्तानी इलेक्शंस अमेरिकन इलेक्शंस के बीच में गड़बड़ होगी पाकिस्तान में, ठीक है, क्योंकि दे हैड टू सी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, दे वर नॉट श्योर कौन आने वाला है। इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में होगा, क्योंकि अब जो है प्रेशर जो है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे इमरान पे बहुत, राइट। इवन अब यूरोप से भी प्रेशर आ रहा है। इनकी वो ट्रीटी साइन होने वाली है मार्च में ऑन फ्री ट्रेड एंड ऑल दैट, आई थिंक वो होल्ड पे चली जाएगी बिकॉज ऑफ द मिलिट्री कोर्ट्स एंड ऑल दैट। उन्होंने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया, यूके ने भी दिया और यूरोप ईयू ने भी दिया, ठीक है। सो प्रेशर तो इन पर है। और राना सौनाला का ये बोलना कि ये तीनों को टेबल पे बैठ के ये फॉरगेट ईच अदर सिंस एंड एक्सेप्ट मिस्टेक्स एंड मूव टुगेदर, ये पाकिस्तान को डेमोक्रेसी की तरफ ले जाएगा, दैट इज अ सिग्नल इनफ कि दे आर रेडी टू सिट विद इमरान। मतलब उसमें तो कोई शक नहीं है। बट लुक, व्हाट ट्रम्प सेज इज व्हाट अमेरिकन्स थिंक। अमेरिकन्स नो कि इन्होंने इनके साथ क्या किया है एंड अमेरिकन्स आर गोइंग टू स्क्वीज दैट। पाकिस्तान इज अ यूजफुल इडियट। सो इट्स अ वेरी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप अमेरिका का जो है वो पाकिस्तान के साथ होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। पाकिस्तान इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक अलाई, पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्टनर, पाकिस्तान कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान इज अ क्लाइंट स्टेट। पैसा पकड़ो, काम करो और सर झुका के काम करो। दिस इज व्हाट द न्यू रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिकन्स। ये काफी टाइम से डिफाइन हो चुका है वैसे, रिगार्डलेस ऑफ ट्रम्प और रिगार्डलेस ऑफ बाइडेन। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोई इनको कुछ दिया तो है नहीं, मतलब ही दिया और तो कुछ नहीं। आई मीन $450 मिलियन दे दिए थे F-16 ठीक करने के यार लिए। वो ट्रम्प ही देगा। वो 450 नहीं देगा, वो शायद 200 देगा, बट वो भी देगा, ठीक है। वो इनको स्क्वीज ज्यादा करेगा, बट इनको ये लीश टाइट करके इसको रखना पड़ेगा। तो उसके लिए उनको जो देना पड़ेगा वो देंगे। बट ये नहीं है कि पाकिस्तानी जो डिक्टेट करते थे कि बिलियन से वो अब मिलियन पे भी आ गए हैं, तो वो भी मुश्किल से ही आ रहे हैं। तो सिचुएशन वहां आज की डेट में अमेरिकन के साथ पाकिस्तानी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बड़ा अभी देखो, अगर रीजन के अंदर अगर आप देखो, पाकिस्तान को भी यूज करना है इनको, ठीक है। बट मैंने तो ये सोचा था पाकिस्तान को यूज करेंगे दूसरी चक्कर में। यहाँ पर तो उल्टा पड़ गया, इन्होंने अफगानिस्तान को ट्रिगर कर दिया कि भाई साहब। तो इसका आपको लार्जर गेम क्या दिखता है? पाकिस्तान को वीकन कर रहे हैं फॉर अ लार्जर गेम गोइंग फॉरवर्ड? आगे जाके जो गेम खेलने वाले हैं उसके लिए पाकिस्तान को भी ढीला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली पाकिस्तान को ढीला कर रहे हैं। पाकिस्तान को जिस चीज के लिए यूज कर रहे थे उसके लिए तो ये यूज कर ही रहे हैं, राइट। बट ये जो अफगानिस्तान के साथ इनका पंगा है, ये तो होना ही होना है, इररिस्पेक्टिव। एंड ये पंगा जो है ये डिफाइन करेगा कि पाकिस्तान को जब आप पाकिस्तान को कैसे वीक करोगे। हाउ विल यू वीकन पाकिस्तान? यू कैन ओनली वीकन पाकिस्तान बाय मेकिंग जहादीज फाइट अगेंस्ट ईच अदर। आज की डेट में पाकिस्तानी आर्मी की जो रेपुटेशन है विद इन जहादी ग्रुप्स, इट्स वेरी लो। दूसरा, क्लैश इज एविडेंट बिटवीन एलिटी एंड बिटवीन तालिबान। क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी होगी। ये सीरिया में भी होगी, ये इराक में भी होगी, ये पाकिस्तान में भी होगी, अफगानिस्तान में। क्योंकि द पाकिस्तानीज आर नॉट लाइकिंग द वे जोलानी एंड ऑल दैट हैव कम इनटू पावर। दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कि आपको लगता है कि इस तरह का कुछ पाकिस्तान में हो सकता है? नहीं, नो, दैट इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट, दैट इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस प्रोपोजिशन। ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉट द एंटायर पाकिस्तान, दैट इज व्हाई some regions of Pakistan, some regions of Pakistan, your KP is already under them. You already have Masood sitting there. Treat him like a Julani. He's just not taken complete control, but large part control तो उसने लिया हुआ है। और going forward, KP will become more autonomous, will fall to Afghan Taliban. KP will not stay with Pakistan.
बलूचिस्तान फ्लक्स में रहेगा क्योंकि पाकिस्तान वो ग्राउंड में देंगे नहीं, ना चाइनीज को घुसने देंगे, ना चाइनी अमेरिकियों को नहीं घुसने देंगे, अमेरिकी चाइनी को नहीं घुसने देगा, तो वहां लड़ाई चलती रहेगी। बीएलए को यहाँ से भी सपोर्ट आएगा, वहां से भी सपोर्ट आएगा, तो वहां बचा क्या फिर? वहां फिर बचा जर्नैल और उसके पाकिस्तानी आर्मी में इस टाइम पे कितनी डेप्थ है इसको सस्टेन करने के लिए? किस चीज को सस्टेन करने के लिए? ये जो भी कर रहे हैं, आज तो थोड़ा बहुत खैर रोक दिया है लोगों ने, नहीं रुक बट गया ये है, तो टेम्पररी है। Let's stop. ये तो टेम्पररी है ना, फिर से लड़ेंगे। लो लेवल वॉरफेयर यार, हाँ तो लो लेवल वॉरफेयर ही क्यों नहीं सस्टेन करेंगे? क्या प्रॉब्लम है? लो लेवल वॉरफेयर कौन सा? इनको मिसाइल चलाने हैं, जहाज उड़ानी है, टैंक चलाने हैं, इंसान बोलेगा तेल खत्म होने वाला है। लो लेवल वॉरफेयर है, सस्टेन करेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि मोराल कितनी देर तक इनका रहेगा लड़ने का। आगे जाके कहीं पश्तून सोल्जर जो है वो जाके हथियार न डाल दे कहीं जाके केपी। आप यार सवाल तो पूछने दो ना, आप सवाल में अपने जवाब में सवाल पूछ लेते हो, साइंस के कैसे चलेगा? तो पश्तूनों का क्या होने वाला है? बिकॉज अभी इस टाइम पे जो भी मरे हैं और जिनके नाम बाहर निकले थोड़े बहुत, सारे पंजाबी है, पश्तून नहीं है, पता चला है। तो क्या पश्तूनों को साइड में करा है इन लोगों ने? हो सकता है कि रहो, पाकिस्तानीज डोंट ट्रस्ट देम। मैं वही तो कह रहा हूँ, पता चला आगे जाके पश्तूनों ने जाके बगावत कर दी, वो जाके केपी में मिल गए, फिर क्या करोगे आप? इट इज अ पॉसिबिलिटी। पाकिस्तानी आर्मी को सोचना पड़ेगा। एथनिक डिवाइड तो ओपन है, समझ आएगा ना। अभी तक तो पाकिस्तान में गरीब पश्तून, बलोच, सिंधी मर रहा था, पंजाबी ऐश कर रहा था, पंजाबी मरेगा। फिर देखते हैं, लेट्स सी फिर क्या होता है। तो भी इमरान खान का क्या गेम रहेगा आगे जाके? आएगा बाहर, अगर डील लेता है तो आएगा बाहर। कब तक क्या होगा आगे? वेट टिल फेब तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फेब तक आ जाएगा, फेब या मार्च में आ जाना चाहिए। फेब इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि फरवरी मिड फेब में ये बाहर आ जाए। पता चला हैप्पी वैलेंटाइंस डे हो रहा है उसको 14 फेब अनदर डेट। ऐसी इमेजेस मत डालो यार दिमाग में। बुशरा बीवी एंड इमरान खान स्टैंडिंग हैप्पी वैलेंटाइन, ओ यार। Well, I gave you another date, 14th Feb. Chalo. That is a wrong image. I didn't want that in my head. Okay. Asim Munir. But can you imagine Bushra Bibi and Imran Khan standing in what do you call no, but I am not even thinking. But I am not even thinking Bushra and Imran. No, I'm thinking Imran and Asim Munir giving a bouquet of roses to each other. That is how I. That I can accept. That picture in my mind I can accept. चलेगा वो. Yeah, except that. वो picture देखो. Happy Valentine's Day. I am the biggest fan of बुशरा बीवी. ऐसे मत बोलो यार, दिल तोड़ रहे हो आप. हाँ तो Valentine's Day हो रहा होगा, एक साथ मुनीर और इमरान मना रहे होंगे. You don't know. It depends on what deal Imran takes, how far he is willing to let go of things. वो देखना. But you know, the factor that I am quite confused about in this entire affair कि ये जो पूरा ये चक्कर चल रहा है and जिस तरह से आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, you know, हाँ लड़ाई होती है, पर जिस तरह से इन लोगों ने लड़ा है इस बारी, this is not, ये तो मतलब बोलते हैं ना पूरा अंदर की पेट के the bottommost part of your stomach you've taken out all the frustration and gone like तुम्हारी भैंस की यहाँ थाड़. I mean, and that's what the Afghans have done. पाकिस्तानियों की तरफ से वो रिएक्शन नहीं आया. They didn't even expect कि इस तरह का रिएक्शन आएगा इनकी तरफ. If you remember, this is initially जब इस साल टीटीपी के अटैक शुरू हुए ना, हाँ, ये इंटेंसिटी हम टीटीपी की देखते थे. वो जब पुलिस स्टेशन पे अटैक करते थे वो इसी इंटेंसिटी से करते थे. This is the fighting intensity of Taliban. ठीक है, पाकिस्तान की तरह नहीं. The Pakistani airstrikes are also done. No real, damage. So तेल ज्यादा चला गया, मिसाइल ज्यादा चला गया, डैमेज कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं उनको हासिल. अभी तक उनको एयर स्ट्राइक्स में कुछ भी नहीं मिला, right? The problem is the ferocity from the Afghans will be very, very high.
और जितने ये, अगर आपको याद होगा, ड्यूरिंग 2004 when this KP region was like a open thing, Americans air strike करते थे, and women and children used to die in this area. There was a lot which Taliban internalized at that time. So ये जो air strikes है ना, ये बड़ा वहाँ की population को, this makes them more headstrong and more resistant and more revengeful. So every airstrike they will do, there will be a very, very strong revenge coming from the Pathans, from the Afghans, irrespective. But why did they choose an air strike? कितने टाइम से इन लोगों ने करी नहीं है एयर स्ट्राइक, इनको पता है वहां पर एयर तो डिफेंस आ और क्या चुका है। करेंगे? और क्या यार करेंगे? शेलिंग कर लो, इतना कौन तुम डीप में शेलिंग क्या जा करेंगे? यार 40 किलोमीटर तो जाके तुमने ठोका है उनको। 40 किलोमीटर इज ऑल यू एंटर्ड इनटू अफगानिस्तान, उसके आगे तुम जा नहीं पाए। ठीक है, यार अब शेल ठोकने के लिए उसके भी 2-3 रीजन है। तुम साले F-16 लेके नहीं जा पाए वहां पर, JF-17 लेके गए हो। JF-17 तुम्हारे बेस्ड है सारा सरगोदा के अंदर। सरगोदा से उस तरफ जाने में पहले तो तुम्हारी रेंज ही फुट हो गई होगी। JF-17 की टोटल रेंज 400-450 किलोमीटर है, 465 किलोमीटर। 2 ड्रॉप टैंक लगा लो, 1000 किलोमीटर मैक्सिमम। आप जाके लैंड करो भैया, यू आर ऑन यूर फ्लाइंग ऑन फ्यूम्स। तुम 40-50 किलोमीटर अंदर जाके करके आए हो। उसमें भी बेसिकली मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई ये अंदर घुसे हैं, इन्होंने पहली जगह देखी है कुछ पॉपुलेशन, साला दे जेटिसन दे बॉम्ब्स एंड रैन फ्रॉम दे, हमने बॉम्बिंग कर दी। रॉन्ग इन्फो, बेसिकली रॉन्ग इन्फो है कि भैया दे जस्ट ये कुछ दिखाए, मारो उसको। रॉन्ग इन्फो, सेम लाइक अमेरिकंस यूज्ड टू डू। आर यू ट्राइंग टू टेल मी ISI की इतनी हालत खराब है, दे डोंट नो वेयर द टेररिस्ट्स आर? सेम लाइक CIA। ओ यार CIA तो बेवकूफ है, वो सारा एडम्स जो थी ना, वो यार नहीं, वो बेवकूफ नहीं है। बाय द वे सारा वो बेवकूफ नहीं है। हाँ, अरे आई रिमेम्बर सारा। मेरे साथ काफी झगड़ा हुआ कल, बाय द वे, ऑन ट्विटर। ठीक है, अच्छा, मैंने मैं उसको उसको लगा मारी, उसके बाद शी ब्लॉक्ड मी आफ्टर दैट। कहती है नो सम फंड्स आर बीइंग स्विंडल्ड हियर एंड देयर एंड दिस एंड दैट। बुलशिट यार, डोंट गिव मी फंड स्विंडल। तुम्हारे जो हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन वाले लोग हैं, जिसको नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी या USAID पैसे देता है, प्लीज डिग इनटू इट, वो पैसे कहां जाते हैं उसके बाद जरा मेरे से बात करना। एंड वी लिव इन दिस एरिया, वी नो व्हाट द ब्लडी हेल इज हैपनिंग। और तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तभी 20 साल से सालों एक ही जगह पे लड़के और उसी जगह को तुम वापस देके गए, लूजिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ योर सोल्जर्स एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। जरा मुझे बकवास मत करना। आई नो हाउ ISKP इज बीइंग रन। उसके बाद शी जस्ट ब्लॉक्ड मी इन विद इन सेकंड्स, शी ब्लॉक्ड मी ऑफ। Yeah, she is very sympathetic to Pakistanis. That's the whole point. तो अमेरिका का क्या रोल दिखता है आपको इसके अंदर? देखो, बैड इन्फो मैंने CIA क्यों बोला, क्योंकि CIA को भी इन्फो ISI ही देता था, अगर आपको याद होगा। Blind leading the fucking blind, sorry. The drones used to fly from Pakistan. The CIA used to provide info, the Pakistanis used to provide, ISI used to provide info, and they used to carry out the bombings. But ये तो अपने बंदों को ठोकते थे वहां पर। तो आज भी किसको ठोका इन्होंने? So this is what they have learned. This is what they have learned. So आप क्या करोगे? You know, guys, मैं ये एक चीज सोचता रहता हूँ काफी टाइम से। I've been kind of pondering over this कि देखो यार, we joke around with Pakistani army and this and that, but यार अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तान ने 40-50 साल से ऑपरेट करा है, एंड इनकी एफिशिएंसी इतनी खराब नहीं है, बिकॉज वी सी दैट इन कश्मीर। सी, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ऑपरेट करा है, बट ये भी आप देखो कि जो पाकिस्तान में जिस ऑफिसर ने ISI के पाकिस्तान से अफगानिस्तान में ऑपरेट करा है, वो एंड में जहादी बनकर या तो अलकायदा में बैठा हुआ था या ISIS में बैठा हुआ था। वो उतना ही जहादी है। ठीक है। नंबर 2, Afghans are masters of deception when it comes to these things. They're literal masters of deception. पाकिस्तानियों ने कुछ भी नहीं सीखा है पिछले 30 साल में अमेरिकन के साथ अफगानिस्तान में लड़के कि ये कभी भी अपने TTP कैंप्स को ओपन पाकिस्तानियों की तरह बेवकूफों की तरह ऊपर नहीं रख।
इनके अपने ऑथर्स को अगर ये पढ़ लें तो इनको समझ आएगा कि हाउ डीपली दे गो इनटू द केव्स और वो कितना किस तरह अपने बंदों को प्रोटेक्ट करते हैं, वो देखने वाला चीज। बट दिस इज मोर लाइक अ मैसेज टू द टीटीपी सेइंग दैट हम तुम्हारे मारेंगे, हम तुम्हारे बंदे मारेंगे, हम तुम्हारी फैमिलीज मारेंगे। लिटिल डू दे रियलाइज कि this is not going to have any effect on the Pakistan, on the TTP guys. On the contrary, अब क्या होगा, पाकिस्तान में नाच होगा। And don't take assassination of Khalil, Haqqani in a very light way. It will have huge repercussions for Pakistan. As in? Watch. कुछ प्रिडिक्शन तो करो भाई, 22 नवंबर तो बोल दिया आपने, उसके बाद तो Watch how they blow up. Watch how they start blowing up Pakistanis inside Pakistan. I'm not talking about KP. What if they take out some senior general? Or his wife? Or his kids? Just watch. This has just started. No, this whole game has just started. एक स्टेटमेंट आया है, आपको पता है ना, एनआरएफ की तरफ से। हैव यू सीन दैट स्टेटमेंट? Which one? एमआरएफ की, एनआरएफ नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑन द अटैक ऑफ तालिबान टेररिस्ट ऑन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। कहते हैं भाई वी स्ट्रांगली कंडेम दीज अटैक्स। इसका क्या मतलब है? पाकिस्तानी इज नाउ वेरी कनेक्टेड विद द एनआरएफ। The NRF is connected. They were trying to connect NRF with the. See, NRF is basically run by what's his name? Amrullah Saleh. उसकी बैकिंग है उसको, वो अमेरिका में बैठ के उसको बैक कर रहा है, ठीक है। ही इज प्लेइंग अ डबल एज स्वॉर्ड की गेम। एनआरएफ दोनों साइड गेम खेल रही है। एनआरएफ आईसिस के साथ भी गेम खेल रही है और एनआरएफ अफगानिस्तान में भी गेम खेल रही है, बट एनआरएफ का उतना ट्रैक्शन नहीं है, राइट? तो NRF has basically reduced itself in giving. NRF को आप देखोगे, the day they have to run over Taliban and they have to finish off them and give control to ISIS, NRF will be leading that fight. But अभी वो बहुत दूर है, ऐसा कुछ अभी हो नहीं रहा। So NRF को तैयार कर रहे हैं। या बट NRF में कौन है वो? कोई भी नहीं है। मसूद का बेटा है, मसूद का बेटा है और कोई नहीं है। Nobody else. उधर पे so he might see all of them are useless till they become useful for Americans or the Chinese. Okay, they all are useless, but they're very useful for these people. So they are being kept on the side for a later game which needs to be played in this area. उसमें भी 10 साल, 10-12 साल है. That is when Pakistan breaks up. That is when these guys will come heavily into picture. Probably this is the only place me and Raja साहब kind of disagree. ठीक है, मैं बोलता हूँ 2 साल, राजा साहब बोलते हैं 10 साल, बट मैं अपने एनालिसिस पे मैं फिट रहूंगा 2026। Now we can always agree and disagree, but दो साल is too quick. नहीं होने वाला। हाँ साहब, आप देखो जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स चल रही है ना, भैंस की आंख। I mean we've seen stuff which we never expected happen. ठीक है, हमने देखी है। I'll tell you why. I will tell you why it will not happen. It will not happen because they have to stabilize Middle East now. Some reason. After Syrian takeover, they are going to put their energies into some kind of stabilizing effect in Middle East. इसलिए they will not disturb it right now. हाँ यार, but that is a double. That is a very. Middle East वही मैं कह रहा हूँ. That is a very. Everybody wants to take on the other side. Game interesting होगी ना Middle East की. The Saudis will be very edgy with this Julani. He's a prop of Turkey and Qatar. Saudis are not going to like it. Saudis ने तो ऑलरेडी ब्रिक्स डिच कर दिया, बोला भैया थैंक यू वेरी मच, ब्रिक्स बुक्स नहीं चाहिए मेरे को, अमेरिका जी। वो मुझे यार देखो, ब्रिक्स इज नॉट अ प्लेटफॉर्म व्हिच आई सी इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रांग प्लेटफॉर्म, क्योंकि उसमें फॉल्ट लाइंस बहुत हैं। अरे हेडक्वार्टर ही नहीं है, फॉल्ट लाइन तो छोड़ दो। फॉल्ट लाइन है, हेडक्वार्टर छोड़ो, आप हेडक्वार्टर चलो कहीं भी खड़ा कर दो, बट उसमें फॉल्ट लाइंस है। देयर आर फॉल्ट लाइंस विद इन इट, ठीक है।
So I don't. BRICS is good. It's a good platform. It's an alternative platform, but it's not something which is being touted as key. This is going to be the next big thing in the world in coming at least 5 years. ऐसा नहीं होना. एटलीस्ट जब तक ट्रम्प है तो आई डोंट थिंक सो. करेक्ट. Yeah. आखिर मैं छोटा सा सवाल पूछता हूँ. डू यू थिंक मुनीर एंड गैंग कैन लास्ट? Last as in Will they politically last? or power? Politically, powerly, everything. Will they last? Let's see what Imran does. How much is Imran willing to? क्योंकि ये जो इसने बाजवा वाला आज स्टेटमेंट दिया है बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है. This is kicking the army in the gut without anything. But I think for the moment he will last. Will the Taliban let him last? Let's see. Will he survive? That is also a question. But till March he will survive. Till March he's there. Fantastic. Let's get into questions, guys. Jara like kariye video ko. There are 5,800 people watching this show. That's a huge number. Thank you so much, all of you, for watching. Please video ko like kariye. We got 1,800 likes. We should be hitting at least 3,000 likes. So please like जोर से दबाइए. Don't feel shy. It's just touching the like button, nothing more than that. TV पे भी कर सकते हैं आप लोग. तो please hit the like button and subscribe. 370,000 का हमारा स्कोर है. धीरे धीरे करके हम लोग पहुंच रहे हैं वहां पर हमारे मेन टारगेट विच इज 400,000. सो आपका सपोर्ट, आपका प्यार इसी तरह चलता रहेगा तो वी विल. एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. मेरा जब एक ही छोटा सा गेम है विच आई एम गोना डू व्हेन आई एम डूइंग द क्वेश्चंस. वन थिंग गाइस, जब आप सवाल पूछ रहे हो आपको एक चीज याद करनी है कि यू नो दिस रीजन जो है, this is next on the books of resetting, if I may, not re-stabilizing but resetting. ठीक है. और सीरिया के अंदर जो रीसेट होने वाला था 2007 के बाद, 8 के बाद, 9 के बाद, 10 के बाद, 11 के बाद, वो हुआ नहीं. अभी 24 में हो रहा है वो. सो आई डोंट थिंक ये द पावर्स दैट बी विल स्टॉप, क्योंकि इनको पता है अभी लोहा गर्म है, ठोक ठाक के खत्म करो. And that is where I'm saying कि भाई this area is going to go into quite a bit turmoil, and be thankful that you're staying in India. But issues आपके पास भी आएंगे, but trust you me, be thankful you're staying in this country that can protect us from all sorts of stuff around the place. So note that, thankful to God, and just pray to God that your country stays safe. चलिए सबसे पहले बिल्ला बाबा की जय. Raja Muneeb ji, you saw Welcome to Karachi movie depicts Pakistan well. Which movie is that? I don't watch movies. I'm so sorry. यार sorry, आप गलत लोगों से बात कर रहे हो साहब. पैसे पूछे. Pakistani movies तो totally बिल्कुल नहीं. I have a very different image of Pakistani movies. नहीं, apart from that यार पाकिस्तानी क्या मैं इंडियन ही देखता हूँ. Only Pakistani movie I've watched is, and that's a brilliant movie, I recommend people to watch it, is Khuda Ke Liye. It came out after 9/11. Fantastic movie. What is very it all nice about? movie. So it's about a man who goes to US, is very liberal, and his brother who becomes radical and joins Al-Qaeda. It's a very good movie. Fantastic movie. Dekhne wali. Okay. Yeah, that's the only movie I've seen. All right. बिल्ला बाबा की जय once again, sir. Sunday आते हो, हफ्ते भर गायब रहते हो. Are you unknown? हाँ, he is. No, yeah, I was not keeping well, and there were a couple of issues, so that is why I'm taking a bit of a break from Twitter. Nothing else. Detoxifying myself, basically. Come. Ashwin Suresh ji, thank you so much. Are people in Sistan Balochistan empathetic towards BLA? Also, are there ethnic issues in Sistan Balochistan? Majority Baloch being Sunni and Sistanis being Shia. Actually, Sistanis, lot of them are also Sunni there, correct? Yeah. Lot Sunni and Shia almost 60-40, 40-60. The point is, yes, there is an ethnic divide there. That is very, very true. Are they empathetic towards Shia? People who are living on that side, not really. But yeah, I mean, at the end of the day, if you have Jaish-e-Adal and you are there, operating in that area, that tells you how sympathetic they are towards the Shias.
uh, there is a huge rift between them, but the Sunnis in the Iranian part of Sistan are treated very badly. In a sense, they don't really have a very good voice and a very good opinion. People don't have a very good opinion about them. So that problem is persistent in that belt. That's sad. Yeah. That's very sad. Kunal Rai sahab, thank you so much. Will America or China help Pakistan on this issue? China, we've Which spoken. issue? What about America? This war. Nobody will help them. Why would they help them? Why would they be interested in helping them? They will just add a little more fuel to the fire. Keep stoking it. Nobody is going to help Pakistan into this. Even God is not willing to help Pakistan now. Yeah, forget US or China. US and China के लिए पाकिस्तान के लिए US and China है तो God है. हाँ वही है ना, but that is why I said even God is not willing to help Pakistan. Yeah, well, interesting. Americana. Raja Muneeb ji, is it a good thing or bad thing for India if Taliban forces are victorious in Pakistan? Is India watching the scenario carefully? I'm sure we are. I think we are watching it very closely. Look, I would not say it's a good thing. It's not a good thing. It's not a bad thing either. But the kind of relationship we have with Taliban, it's a good working relationship. And for some time, it will be a good thing in a sense that, they will stabilize the other jihadi groups. They will, cull their heads, something like LET. Though LET has its rank in Al-Qaeda also. They have fought with Al-Qaeda, but irrespective of that, they'll be busy sorting themselves out rather than, looking at it. But as far as the Taliban is concerned, यार एक चीज है तालिबान के बारे में, that तालिबान ने जो चीजें बोली हैं आपके साथ और जो चीजें इस रीजन में बोली हैं, they've never crossed the line. Because they know they cannot cross the line. They've never crossed. They know they cannot. They cross the line, then they are in trouble. Yeah. Nobody would want them. So they don't want to get into that. They want to consolidate now. Yeah. Suresh ji, thank you so much. He says, does Afghanistan have enough weapons and fighters to sustain long-term conflict? What about war fatigue on Taliban? Would Afghanistan people be disillusioned with the Taliban? No. There is one thing of Afghans you need to know, that they don't get war fatigue. They're a war machine. So no war fatigue. And they have been fighting for a very long time. They have far more resilience to sustain this war than the corrupt Pakistani army personnel. So war fatigue on Pakistan could be a thing, but not on the Afghan side. Mr. Chakravarti ji, thank you so much. He says, good evening, Raja ji, Aadi ji. Oli Sharif Yunus to revive SARC in their dreams. India sends 27,000 tons of chawal. It's not 27,000 tons, it's 25,000 tons at the moment to Bangladesh, while 2% pay the 18%, 28% taxes. Why? Why? I mean, what why? Why do we send rice to them, or why do 18%, 2% people spend tax? What is the question? That's a very rhetorical question. You have to pay tax. Why not? I mean, why not? What do you want to do? Yeah. We are sending rice to them. Why not? Why do you forget that a large part of Bangladeshis, Hindus are also there? No, the country economy needs to sustain. You can't create a famine situation there. So why would you also do that? We don't realize, and a lot of people have not told this. This is not the government that has sent. It's a private entity which bid for this. No, even if it is the government, why not? My question is, why not? You won't send it. They will get it from somewhere else. The Chinese will be happy to send them. The Pakistanis will be happy to send them. Chinese कहाँ से? Chinese तो साले चावल हमसे लेते हैं. यार कहीं से भी लाके दे देंगे. Strategic depth बनाने के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार होता है. So why would you not? That's the point. Ravindra ji, thank you so much. Yes, we can meet in the JD Pune. Please come there, find me. We shall catch up. If Rajesh ji says, if US wants Chinese foot on the ground and harass Taliban, so they equip Pakistan with huge arms to engage them. So Pakistan gets enough arms and equipped ISKP to tackle the TDP. Will this strengthen Pakistan? No, because one thing is there that, see, the Chinese foot on the ground to harass Taliban. They will not harass Taliban, first of all. Pakistanis will get huge arms. No, they won't.
देखो एक चीज समझो कि पाकिस्तान में जो जहादी ग्रुप्स है ना, लॉट ऑफ देम आर ऑटोनमस at the moment, the way they operate. They might be even making direct deals with international powers which you and me might not even be knowing of, or even if we know of, there is no proof of talking as such. But the reality is that this is a balanced power. They have not given Afghanistan to Taliban to upset the Taliban. Yeah. On the contrary, they want Pakistan in a flux. So they want the Chinese also in the flux. They will, if tomorrow they will rather supply weapon to BLA to harass the Chinese. Why would they give it to Pakistanis? They would give it to TTP. That's true. That is absolutely true. Fayaz ji, he says, Aadi exposed Sarah Adams' nonsense about raw Bharat and Afghanistan. And she's a shameless woman. I've done it so many times. She comes back always. Forget it. Akash Gupta ji, thank you so much for your super sticker. You know what I told her? I said your mothership has always been wrong. No wonder you're exactly like this. She's a rogue. She's a rogue one. Will Taliban be able to withstand and overcome the Pakistani army, as they say it's a trained military? Yeah, it is a trained military which is trained in doing business, the best Bania force in the world. Fighting it is not trained for. Who told you they're trained for fighting? And who told you Afghans will not sustain them? The Pakistanis can't fight the bloody TTP in bloody their own land, yaar. वहां पे वो जूते खाते हैं, अफगानिस्तान घुसने की तो ड्रीम है. They can't even think about it. इसको बोलते हैं राजा जी ने उतार दी पैंट. 1971 में उतरी थी, अब दोबारा उतर गई है यहाँ पर. This is तो who told you they're a trained military? They are trained in other things than fighting. That's the only thing they're not trained in. अक्षय आयर जी पूछते हैं कराची का पश्तून राइट कब करेगा राजा जी? अभी नहीं करेगा. There is very less Pashtun. उन्होंने वैसे भी वहां से बहुतों को बाहर निकाला है. Not happening. Writing will not happen. पश्तून फटेगा कब वो पूछो. एक आधा बैठा होगा कराची में फाड़ देगा अपने आप को. फटने का ज्यादा चांस है, राइटिंग का कम चांस. दीपेन साहब पूछते हैं वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी स्मॉल वन. ही सेज ईरान सिचुएशन का फायदा लेगा क्या? यार Iranians are on a back foot right now. Will they take advantage of this? In what sense? What can Iran really take advantage of? Will they strike on Jaish al-Adl? I don't think so. They will do it as and when required. So, मुझे नहीं लगता. Iranians are more looking at how to strengthen themselves and let these two fight so that the kachra doesn't come to their side. So, फायदा वो उस सेंस में उठा सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा. They're very paranoid about what is happening in Afghanistan and Pakistan. Rajesh ji says some news coming that Newland Auntie is again activated in the region, last ditch effort due to duck failure. Is it for India? Sir, she has not been activated in the region. She's been activated in the National Endowment of Democracy on the board. And that happened about August, September, if I'm not mistaken. Yeah, who takes her seriously? No, I mean, you do take her seriously, but I don't. She's now on her way out, so. Look, once they are exposed what they are into and their game is exposed, I don't take them seriously. Because now you know how to deal with them. That's it. Who takes them seriously? It's not a missile jo aake phatega yaar. Rocky Johnson ji, thank you so much for your super sticker. Abbas Mathur ji, thank you so much. You say, where is the NDA trained Afghan army officers now? Most of them are either in Britain, America. Some of them are in Taliban, joined hands, but most of them are out. And many of them got killed. Taliban got rid of them. Yeah. Global Office 2.0, seeing you after a while. Are Asim Muni's days numbered? Why did he do something so foolish to attack Afghanistan? They very well know that it's like hitting a beehive without protection. What's going on in Muni's mind? Yeah, what will the man do? They're getting beaten day in and day out. ठीक है. His men are dying like chicken in Pakistan. There are questions on him. Why are we not retaliating? The only thing he does is he carries out an airstrike. That too a very poorly coordinated one. His days were numbered from the day he came in because everybody was after him. So, what do you expect from a general? क्या करेगा वो? And his days are numbered. I'm telling you till March. By March, you'll know whether Munir will stay or will he become Zia. Let's see. Fantastic. Ankur Mishra ji, thank you so much. Sir, does USA need Pakistan for regime change in Iran?
Yeah, I don't think Pakistanis are required for regime change in Iran. The Pakistanis are more required for what is happening in Bangladesh. Bangladesh and China. Yeah. Yeah. Mohammed Bilal ji, as a Pakistani, I would like to say West USA want us all to fight each other. For China, they want India to fight. For India, they have Pakistan. For Pakistan, they have Afghanistan, and the cycle goes. बिलाल जी मैं हाँ, आपको but एक here चीज is my माइंड बुरा मत मानना मेरी बात का बिलाल साहब आई थिंक यू वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पाकिस्तानीज हैव कम अक्रॉस कांग्रेचुलेशंस डोंट वेस्ट इट इन पाकिस्तान बाहर जाओ जिंदगी बनाओ अपनी no, but that is a good question. That is a good answer also. But Bilal, here is my counterpoint to it. You know, every I would say a thoughtful Muslim I talk to, he blames everything on USA. God has given you enough brains, no? Use them. Why are you getting used? And for what? Is my question. So that's a question I ask. You know, you blame America, very good. Yeah, I also blame America. The Americans are using. But at the end of the day, who's getting used? Yeah, that's So it. where are your That's it. brains? Why are you getting But I used? must say, भैया इतने टाइम से मैं 2.5 साल से शो कर रहा हूँ No, no, he's right. He's right. He's absolutely right. बिलाल So I साहब ने agree with चक्का him. मारा है बड़ी जबरदस्त एंड रिस्पेक्ट बॉस Till we जबरदस्त don't use our own brains, I mean, the cycle will go on. Yeah. I agree. बिल्ला बाबा की जय थैंक यू सो मच सेज वेलकम टू कराची सटायर मूवी अरशद वासी आई डोंट नो No idea, brother. So sorry. मैं तो नाम भी नहीं सुना ये अरशद वारसी कौन है मैंने भी नहीं सुना अरशद वारसी आई नो कौन है बट मूवी का मैंने भी नहीं सुना एंड आई हैव नो आइडिया आई डोंट वॉच मूवीज वो इस टाइप की तो मैं नहीं देखता आई हैव नो क्लू मैन शौनक द ओनली भट्टाचार्य जी सॉरी थिंग आई सॉ वाज तेरे बिन लादेन दैट वो भी मैंने पार्ट्स में देखी There's a थी movie सटायर called ऑन बिन Tere Bin Laden. हाँ इट्स अ वेरी फनी मूवी यार मतलब कॉमेडी बनाई थी वो बात Yikes. सो वो मुझे थोड़ी सी याद है बस दैट्स इट Sorry guys, I might sound like a jerk, but I really don't know this stuff. Shaunak Bhattacharya ji, thank you so much. He says, what can we get from reset that secures us for decades? There is nothing to reset that will secure us. We have to secure us every day. There is no guarantee of decades. You have enemies all around. You'll always have enemies all around. So the only thing will secure us is a stable economy and a growing world footprint. That's it. Nothing else. Just trust yourself, no one else. Malik Saab, thank you so much. Thanks, Aadi, Raja Sahib. Love your analysis. Wait for your discussion by YouTube. Thank you, Ji. Thank you so much. Thank you, Raj Lovely Malik ji. your comment. Norman Ji, अरे वाह, well done, Norman साहब, well done. ठीक है, pass my regards to the whoever's fighting there. जरा well done, लगे रहो. NRF is run by Masood family whom even the local Tajik people address as thieves who looted Afghanistan. Yes, they'll get hired guns, but they can never pose a threat to the Taliban like ISKP does. Yeah, so I'm telling you, they will start with the ISKP. NRF, nobody takes seriously. It's like Karzai. He's another Karzai in waiting. Yeah, the first time I heard Karzai's name is right now when Manmohan Singh died. उसके लिए उसने कंडोलेंस भेजी मैं बोला ये साला अभी भी जिंदा है हाँ Karzai is very much live and kicking यार चलो ठीक है मैं बोला चल ठीक है यार let him be Ravindra ji thank you so much thanks Aadi love your channel thank you brother Srinivas ji thank you so much for becoming a member Srinivas once again thank you so much he says Pranam Raja ji please cover a detailed session on the situation in POK and GB also what's the situation of unrest there please Sure, we'll do that. Maybe next Sunday we'll talk about it. But would you like things are bad in POJK? Things are bad. Things are very, very bad. And this got triggered with the insecurity. I told you the Chinese roaming around in that area. जब वो 10,000 चाइनीज नीचे आए ना उस एरिया में ये केबलिंग कर रहे थे वहां पे बैठ के तब से इनसिक्योरिटी है पीओजेके में और ये ट्रिगर होकर रही है और फिर जो इन्होंने वो प्रोविंसेस का किया और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया इन्होंने that has taken it to another level. So things are not very good in POJK and GB, but we'll talk about it next time. I'll cover it in detail. All right. And last question, but not the least, and we shall be, of course, back tomorrow morning. Ashwin Saab says, Imran Valentine gift B, Kala Bakra Pinky's gift dal. You are breaking Aadi bhai's heart here, yaar. ऐसे मत करो यार. अरे
Pinky is Pinky Pirni, no. You're breaking Ali Bhai's heart, don't say that. Kala Bakra, not. नहीं, मी एंड कर्नल रायना बोथ, हमने तो भैया पिंकी पिन्नी जब उतरी थी उसके अंदर क्या नाम है प्रोटेस्ट में हमने बोला था हम जाएंगे पिंकी पिन्नी का सपोर्ट करने के लिए. So Imran's Valentine's Day could be anything. Yeah. His gift could be anything. Yeah. Raja ji, always a pleasure, brother, talking to you. मजा आ गया. I Thank think you, sir. we've covered a large arena और आपके साथ बात करने में मजा आता है. We are actually in a conversation through and through, throwing stuff at each other. It's really fun. Keeps you active and keeps you focused. Very, very interesting conversation. And we will keep a track, guys. And अगर कुछ बीच में कहीं पे कुछ बम फटता है तो obviously दोबारा डिस्कशन करेंगे. But तब तक के लिए please drop a like and drop a comment. Show your love for Raja साहब. जय हिंद, जय भारत. Jai Hind, Jai Bharat, sir. 2025, a bigger blast in Pakistan. Happy New Year in advance to everyone.